दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्विंट इंग्लिश और हिंदी पर ये बेहद खास बातचीत जो बजट के ठीक पहले हो रही है। यानी हम कोरोना से रिकवर हो गए, इकोनॉमी में रिकवरी आ गई। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि इकोनॉमी और बजट, इन दोनों के बारे में आने वाले दिनों में हम किन चीजों को देखने जा रहे हैं और क्या आउटलुक होने जा रहा है। वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे, चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट Pranjul Bhandari from HSBC Securities India. Pranjul, thank you for your time. The first question I want to ask you is about after festival recovery numbers and all that, how does economy look like today? Dhanyavad Sanjay ji, great to be on your show. So, it's a great question. And actually the answer is very unique. India has stood out from the rest of the world in one very key way. India is one country in which mobility has increased. लोग इधर उधर बहुत जा रहे हैं, लेकिन नए कोविड केसेस एक्चुअली इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. नए कोविड केसेस एक्चुअली फॉल कर रहे हैं. इनफैक्ट लास्ट 3 महीने में कोविड केसेस हैव फॉलन बाय 80%. In fact, India is one of the only few countries where this is happening. Many other countries are seeing a second wave. And because this is happening in India, we are being able to continue our economic rebound. So, last 2-3 महीने में economic rebound हो रहा था और वो continue होता जा रहा है. लेकिन गोइंग अहेड हम लोग को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा. क्या है कि लॉकडाउन के बाद एक पेंट अप डिमांड था, और ये पेंट अप डिमांड गुड्स का था, चीजों का था. ये अब काफी हद तक कवर अप हो गया है. इफ वी लुक एट पेंट अप गुड्स डिमांड, इट हैज रीच्ड प्री पैंडेमिक लेवल्स. तो अब what will really support growth in 2021? Here we have the benefit of pent up services demand. लेकिन अगर हमें services demand का growth impact चाहिए, then a lot of things will have to fall in place. For example, the vaccination rollout and all of that will have to be good. And I think the budget this year will play a key role in determining, how growth will be in 2021. Just to sort of put it all in one sentence, in 2020, the government may not have played such a big role, and yet India began to rebound. But in 2021, I think the government will have to play an important role if this rebound has to continue. Very interesting, because the global trend was कि खूब सारा fiscal stimulus दे दो, और तब हम कह रहे थे कि सरकार यहाँ कम कर रही है. तो ये कमेंट्री आई थी आप जैसे लोगों से कि सरकार शायद इंतजार कर रही है कुछ क्लैरिटी का. तो in that kind of situation, do you now expect a major fiscal support, and can we afford that? Great question again. देखिए, major fiscal support तो हो नहीं सकता है for a country in which the fiscal deficit is already very high. What the government can do is to tread a very fine balance between supporting growth and yet maintaining prudence. और ये हो सकता है. My sense is that the government must spend on a few things generously. It must spend on the vaccination rollout. It must spend on social welfare schemes like Narega, like PM Kisan. It must spend on capex, capital expenditure, सड़के, bridges, ये सब के ऊपर. And it must spend on anything that the banks need, bank recapitalization. So in that sense, I expect that in this budget, expenditure will remain elevated. Last year, expenditure was 15.4% of GDP. I'm hoping next year also it remains unchanged at that elevated 15.4% of GDP. And yet, I think the fiscal deficit should come down. क्योंकि लास्ट ईयर 7% फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई था, वो कम होना चाहिए. मेरे ओन एस्टिमेट से आई थिंक इट शुड फॉल टू अबाउट 5.8% ऑफ जीडीपी. सो हाउ डू यू डू दिस इम्पॉसिबल टास्क? You don't bring down expenditure, but you bring down fiscal deficit. The only way this is possible is if revenues go up. And revenues can go up in two ways. Either tax collections go up or disinvestment receipts go up. And this time we are lucky because I think tax collections are looking to be very good. The reason is formalization. एक बहुत formalization हुआ है, economy में. The big firms, high earners have done well through the pandemic. You can argue at the cost of the small firms in a lot of cases. But the truth is that if the large firms do very well, they are the ones who end up paying a lot of the taxes. And that is good for tax revenues.
सो अगर टैक्स रेवेन्यूज बहुत बढ़ जाए और कैपिटल मार्केट्स इतने अच्छे हैं, इक्विटी मार्केट्स आर सोरिंग, अगर हम कोई बड़े डिसइन्वेस्टमेंट्स कर पाए तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और इस बढ़े हुए रेवेन्यू से हम एक्सपेंडिचर हाई रख सकते हैं और हम थोड़ा सा फिस्कल को नीचे भी कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी बैलेंस इट ऑल आउट. इंटरेस्टिंग. एक तरीका ये है कि आप टैक्स बढ़ा दें, दूसरा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी जनरेट हो जाएगी कि टैक्स कलेक्शन बढ़ने वाला है. बहुत लोग को ऐसा डर लग रहा है इस वक्त कि कहीं क्योंकि सरकार के पास डिसइन्वेस्टमेंट से पैसे उठाने का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो ऐसे में फाइनली जब कुछ नहीं बचता है तो टैक्स पे ही आ जाते हैं. आपको लगता है कि ये सरकार टैक्स रेट नहीं बढ़ाएगी? देखिए, ये तो अब हमें मंडे के लिए वेट ही करना पड़ेगा. इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू सेकंड गेस, बट यू नो माय सेंस इज कि हम टैक्सेस को जितना अनचेंज्ड रख सके उतना हमारे लिए अच्छा है. क्योंकि यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉलिसी सर्टेनिटी, tax stability. These things are very important for an economy which has come down from a very volatile period in which we are trying to give assurance to the private sector that you will now see certainty going ahead. So therefore, please start investing. You know, keeping policy certainty is very important. So I'm hoping that we don't tinker with any of the tax rates too much. That's my real hope going into the budget. But I can't, you know, we'll see, you know, what the budget Yeah. has to offer. You have explained the most important issues in the budget to look for in a very simple manner for our audiences. Now I want to understand from you about this inequality business, because globally we have seen that bigger companies have got good numbers to show, and the small companies, MSME sectors have suffered, individuals have suffered. How serious is this problem? Well, look, you know, everybody tries to describe this recovery, and the big description that has become most popular is K-shaped. You know, कि कोई लोग ऊपर जा रहे हैं और कोई लोग नीचे जा रहे हैं. So I think this is what it is. We have a lot of data around the world and also in India to show that this is indeed happening. You know, it's just not like sort of a figment of imagination. If you look at corporate results of, you know, December quarter, you will see that the large listed firms saw huge rise in profitability. Their profitability grew 50% year on year. It's a very, very big number, honestly. And the small listed firms, they did not do as well. You know, their profitability did not really rise very much. And if you then look at the small firms who are not in the listed space, who we call the informal firms, उनकी तो negative growth हुई profitability में. So if you look at all of this together, it's very clear to you that there is a lot of inequality in the system. Now this inequality is also getting exacerbated by a weak banking sector. You know, even before the pandemic, हमारे banks थोड़े weak थे, credit growth weak था, low था. अब क्या हो रहा है, जो बड़े firm हैं वो स्टॉक मार्केट में चले जा रहे हैं, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट में जा रहे हैं. फ्रॉम देयर दे आर रेजिंग कैपिटल. बट द स्मॉल फर्म्स who don't have access to equity markets, they are hugely reliant on the banking sector. And if banking sector is not giving credit, it's a double whammy for the small firms. So if you look at it from you know, access to funds, from profitability, from wage growth, from every different perspective, you're seeing large firms, you're seeing high earners are doing much better than small firmers and bottom of the pyramid. Right. You keep studying data in a very, very deep manner. What do you say about labor market and the job situation currently? Yeah, so yeah, you know, India में हमारे we have one source of data, the CMI data, which gives us every week how unemployment and all is looking. The CMI is now showing us that there are 15 million, around 15 million lesser people employed today than exactly 1 year ago. And I think this is something that we need to worry about. What is happening is that high earning people, जिनकी अच्छी नौकरियां थी, they during the lockdown have actually increased their savings because there was no avenue to spend. So they have increased their spending. Right now, they are spending, they are out, you know, lockdown chala gaya, they are spending everywhere, तो हमारा growth बढ़ रहा है. But at some point, the mountain of saving that they have built up will end. And then the growth support will not be there. And then we will look around for the rest of the country and we'll find that the low earners, which make up 85% of our labor force, are actually not doing very well. And kahan se aaya to focus on. एक और इशू है जिसको हम समझना चाहते हैं, वो है इन्फ्लेशन. पहले हमारा चैलेंज अभी तक था लो ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ. अब जब ग्रोथ और रिकवरी हम इकोनॉमी में देख रहे होंगे,
तो इन्फ्लेशन अभी तक हमारे लिए ठीक था, मैनेजेबल था। अब वो अगर एक प्रेशर पॉइंट बनेगा तो और बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाएंगी फिर इकोनॉमी को स्टार्ट करने के लिए। Yes. So let me give you the good news first. Last year inflation was very high. देखिए आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन 4% में रहे और वो 6% तक टॉलरेट कर पाता है. लास्ट ईयर फॉर मेनी मंथ्स इन्फ्लेशन 6% से भी ऊपर था, एंड दैट वाज अ प्रॉब्लम, एंड द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ दैट इन्फ्लेशन वाज फूड प्राइसेस. अभी क्या हुआ है, दिसंबर जनवरी में फूड प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, पर्टिकुलरली लेड बाय वेजिटेबल्स. तो अब फूड प्राइसेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट इज द गुड न्यूज. बट हैविंग सेड दैट, अब क्या होगा अगर ये साल पेंट अप सर्विसेज बढ़ जाए, डिमांड फॉर पेंट अप सर्विसेज, लोगों को वैक्सीन मिले, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, वो बाहर जाए, हॉस्पिटल जाए, टू द डेंटिस्ट, एजुकेशन सर्विसेज, स्कूल्स खुल जाए, क्लब्स जाए, रेस्टोरेंट्स जाए, जो सर्विसेज डिमांड बढ़ सकता है, उससे सर्विसेज इन्फ्लेशन आ सकती है. एंड द प्रॉब्लम विद सर्विसेज इन्फ्लेशन इज कि you can't trade away the problem. You see, in goods you can trade it away. If the price of some good has become high, you can import it from a different country. But in services, you can't trade away the problems, and that price pressure remains. My worry is that if the economic rebound continues and it is supported by services demand, services inflation could also come, and the central bank, the RBI, has to remain vigilant on that front. But having said that, I don't want to scare you. I still think कि इस साल इन्फ्लेशन 6% से नीचे रहेगा. तो एक हम लोगों के लिए एक आउटलुक जैसा या एक ओवरव्यू जैसा या क्या सिग्नल्स वॉच करो, ये पेंट करना हो तो आप क्या क्या बात बताएंगे? मंडे को बजट आएगा. द वन नंबर आई विल बी मोस्ट फोकस्ड ऑन इन द बजट इज स्पेंडिंग, कि कितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी और कहाँ स्पेंड करेगी. वी नीड हाई targeted focus spending, social welfare schemes, vaccination rollout and capex. क्या ये हो रहा है? The other number I look out for is fiscal deficit, क्योंकि रेटिंग्स एजेंसीज वगैरह ये सब बहुत देखते हैं कि फिस्कल डेफिसिट धीरे करके कम हो रहा है कि नहीं. जो डेट मार्केट है, डेट मार्केट देखेगी बोरोइंग नंबर कितना है, कितना गवर्नमेंट आके मार्केट से बोरो करने वाली है इस साल. सो दीज आर द फ्यू बिग नंबर्स टू वॉच आउट फॉर ऑन मंडे. Then end of the week, next week on Friday, 5th February, we have the RBI's first policy meeting of the year. And what I will watch out for is the tone. I'm not expecting any change in rates. I'm not expecting, any major change, but the tone, the sort of reading between the lines. How quickly does RBI want to normalize monetary policy? Because last year, RBI was extremely loose in its monetary policy. Rate kaate, regulatory easing ki, bahut sari liquidity di. In fact, one can argue that because of this liquidity, today, we are seeing equity markets are so high. तो अब RBI का क्या प्लान है? क्या ये लिक्विडिटी को वापस अब्सॉर्ब करना चाहती है? क्या ये इन्फ्लेशन को लेके बहुत वरिड है कि बहुत इजी है? ये हमें फ्राइडे को पता चलेगा. सो ओवर द नेक्स्ट 1 week, you will get to know about India's economy as much as it is possible to know about India's economy. बिल्कुल, ये जो स्पेंडिंग की बात है, ठीक है, सरकार के ऊपर हम नजर रखेंगे कि वो कितना खर्च करती है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त ये है कि सरकार के पास पैसे नहीं है और वो दूसरे तरीके से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की पूरी कहानी को पुश करे. और उसके लिए बहुत बिग और बोल्ड आइडियाज चारों तरफ सर्कुलेट हो रहे हैं. हम सारे दोस्तों से बात करते रहते हैं. एसेट मोनेटाइजेशन, स्ट्रेटेजिक लिस्टिंग, कुछ टेक कंपनीज जो हैं सरकार की प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये लिस्ट करा दें, इस तरह के भी आइडियाज हैं. आपको लगता है कि इतने बिग बोल्ड आइडियाज के लिए सरकार को रेडी होना जरूरी है क्योंकि कंपेलिंग सिचुएशन है, या आपको लगता है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, रूटीन स्पीड में चलेगा? देखिए, सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस ही होता है. वी आर अ large country, a lot of views have to be taken along, so very dramatic changes rarely happen. But having said that, many ideas, they have been there for a long time, and suddenly their time has come and you can see them happening. And I think to some extent there is hope कि इस साल थोड़ा disinvestment ज्यादा हो. क्या हुआ था कि लास्ट ईयर हमने बहुत ही बड़ा टारगेट रख लिया था 2.1 ट्रिलियन का, और उतना बड़ा हो नहीं सका, पैंडेमिक भी था. And to be very honest, even when we saw the number last year, we knew it was an excessively high number. But then what happened, that there was some disinvestments which was just going to happen last year.
BPCL, Concord, लेकिन वो हो नहीं सके because of pandemic led delays. So I'm hoping that in the next year some of these almost ready disinvestments happen. So that is my one big hope. My other big hope is that the big formalization of demand we are seeing, on the back of that, tax revenue collections increase on their own, and the government respects that and does not tinker with tax rates. I'm hoping that. But disinvestments and tax collection, which will be two important sources to fund the expenditure next year. Beyond that, we will go back to what we always do. जो small savings fund है, NSSF, government has been borrowing hugely from there. I think reliance on the national small saving funds will continue. Reliance on market borrowing will continue. In fact, जो borrowing calendar है, मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा घटेगा. So some pressure in the bond market, in our view, will remain. Some new things can happen. For instance, we get included in some of the big bond indices, और उससे बहुत पैसा आ सकता है. मैंने मार्केट के बारे में ज्यादा बात करना अवॉइड किया शुरू में, बट माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट मार्केट्स. जिस तरह का बाजार हाई बना रहा है और सब कहते हैं कि ये डॉलर फ्लो के कारण है, कुछ लोग कहते हैं कि बाजार में अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं इसलिए डॉलर फ्लो कर रहा है. आगे जाते हुए ऐसा हाई देखेंगे या इससे अब थोड़ा सा ये स्पेस जो है स्लो होने जा रहा है? Look, let me sort of give you a disclaimer. I'm an economist, I'm not an equity markets expert. But the way I look at it is that there is a lot of excitement about the formalization that has happened. The fact that a lot of demand has moved from the informal sector to formal sector, from small firms to large firms. And because these large firms are the big listed firms, the corporate markets, are doing well, equity markets are doing well. Going ahead, I think, equity analysts and market participants should be a little careful, because जो formalization है, क्या ये रहेगी कि धीरे धीरे करके थोड़ी सी घट भी जाएंगी? During demonetization, we had seen that a huge amount of formalization had happened, but it did not stick. 1 year down the line, it actually reversed. Informal sector came back with a bang. This year, my hope is that more formalization will stick than it had in demonetization period, but all of it may not stick. So the market will have to carefully calibrate what will stick, which firms will continue to benefit from formalization, but which firms will start seeing the formalization impact peter away. And this, I think, will be important. And I think equity markets will have to become a little more careful and little more analytical going forward. Thank you so much for your time, Pranju. My pleasure. Absolutely my pleasure. Dhanyavad.